All of you can give your attendance now. I repeat, all of you can give your attendance now. Those who have given the attendance earlier, please ignore it and give the attendance now. So it's Yes, sir. 1:14. It's 1:14 p.m. So I will not wait further. So let us start the second lab class of this design lab. Let me present my screen first. Can anyone say whether my slides are visible to you or not? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, fine. Yes, sir. So Visible. in the last lecture of this design lab, we have seen the static structural analysis of a 4-bar truss. In today's class, we will be finding out, or we are interested in analyzing the beam. Fine. If you see, in this class we will be analyzing the beam. So let us look at the problem. What the problem tells us: the problem is a simply supported beam is shown in the figure. This is the simply supported beam. It is having two end loading conditions at A and B. That means the beam is supported at end A as well as end B by roller support. So what will happen is that A and B, two reactions will come on this beam that will be parallel to, or that will be along positive y-axis. Let us call it as RA and RB. The breadth and depth of the section are 200 mm and 30 mm. From the second line, I understood that the cross section of the beam, which I am going to analyze in ANSYS, is rectangular cross section, whose breadth is 200 mm and depth is 300 mm. Modulus of elasticity of the beam material is 2 into 10 to the power 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. That means the beam is made up of some material whose E is given to you. As well as Poisson's ratio is also given to you, that is 0.3. As the beam is in 2D space, you can see that this beam is placed in a 2D space. So that is, you can say it as XY plane. So for that, beam to node 188 element is used to perform the analysis. I have told you in the last class that in ANSYS, ANSYS understand some languages. If you want to model this beam in ANSYS, different types of models are available in beam. So which model you will be selecting to draw this geometry, that is given in the problem. You have to select beam to node 188 elements to model this entire beam. Using ANSYS, find out and show the detailed SFD and BMD. That is, what will be the shear force diagram and bending moment diagram for this entire problem. We have to calculate it manually also, and then we have to validate our manual result with the ANSYS result. Secondly, we have to find out the deformed shape
That means after the application of the load in this beam, the beam will deform. How it is deforming? What is the shape of the deformed beam that I have to analyze in ANSYS? Third one is the animated view of the deformed shape. That means how this beam is deforming after the application of load. If I am interested in looking at this beam bending for say time t equal to 1 minute, in 1 minute how much the beam has deformed due to application of this UDL as well as this point load 500 Newton, that we can animate in, we can see the animated view in ANSYS. How to get that animated view? That we have to find out. We need to find out the overall displacement and the nodal displacement due to the application of these load. Due to the application of load on the beam will deflect. Definitely each element and each particular node of the beam will deflect, will change its position from its original position. That we have to find out. And then we need to find out the value of how much is the von Mises stress acting in this beam. If I assume that the beam is failing by distortion energy theory of failure, then already you know that in distortion energy theory that von Mises stress is plays the most vital role. So how much is the von Mises stress developed in each and every element, in each and every portion of the beam, that I have to find out. And lastly I have to find out the support reaction forces. That means this knife edge support will give some support RA to this beam in positive y direction. Similarly, RB to this beam at point B in positive y direction. What is the value of this RA and RB? That we need to find it out. That means first of all, we will solve this problem manually. Everything we will do it manually, and then we will validate our manual calculation with the ANSYS calculation, and then we will be looking that how much each and every element of the beam is deforming. Is the question clear to you? Any doubt in the question? Okay. No, sir. Okay. So let us solve the problem in ANSYS. So let me open the ANSYS. I will click on mechanical APDL. Let me give some time, at least 1 minute, so that the it get opened. Okay. Can you see my ANSYS screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. it is visible. ANSYS screen is visible, right? Yes, sir, it is visible. Okay. And this command screen is also visible. The second screen, command screen. Yes, Yes, sir, sir. command screen is Yes, visible. sir. Okay, fine. So I have told you that before starting the problem, you can set units. If you won't set units, not an issue. Then while solving the problem, you have to keep the proper units. So if you want to set unit, what is the command? In this command window line, you have to write slash units, comma. If you want SI units, you will write SI unit. If you want CGS unit, you will write CGS unit. Then automatically all the default values will be in that particular unit. So in the last class, in that while analyzing the 4-bar truss,
initially I have written units. So in today's class, I will not write the units. I will try to set the units while solving the problem. Fine. Okay. So very first step is what? Can anyone tell me? What is the very first step? Can anyone tell me what is the very first step? Sir, element type for the set No, profile. no, no. First step is you have to create a file in which all your work will be saved. Yes or no? Yes, sir. So let us create a file. For that, in my utility menu, I will click on file. Then I will click on change title. And in change title, let us write analysis of beam. Analysis of simply supported beam. Which type of beam? It is simply supported beam with UDL. Then okay. Fine. You have given the title of your job. Now you want to see that title in your ANSYS screen. For that, what I will do, if you remember in the last class, if I want to see that title, now that title is not visible to me. What I will do, I will go to plot, then click on replot. See, go to plot, then click on replot. See, now it is visible. Analysis of simply supported beam with UDL. Clear? Yes, sir. This is Yes, the sir. name. This is your job name. Fine. I have not yet created a file in which this particular job will be saved. For that, what I will do, I will go to file and I will click on change job name. In the change job name, I will write, you can write anything. I'm writing beam underscore one, first file. Then click on this window, that is new log and error files. If you click it on, then ANSYS will tell you time to time that whether you have did anything wrong or not. Then then the ANSYS can show you that yes, this is an error file or this is something what. Then click on OK. Now see, in this utility menu, it has been written that beam underscore one. So this is your file name. In this file name, under this file name, everything will save once time to time. If you click on this save underscore db icon, and your job name is your analysis of simply supported beam with UDL. Clear है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Then Yes, sir. go to preference. First select preference. In the last lecture, while discussing the analysis of truss, I haven't told you this step. This is the very first step while doing analysis in ANSYS, design analysis. First step is go to preference. Now, you can see many options are available to you. You can, means you are solving the structural part, thermal part, fluid part you are solving, or some electromagnetic part you are solving. So can you tell me which icon will I choose? Very structural. Structural, Structural, sir. yes. So let us choose structural and click on OK. Now the ANSYS understands that yes, you are doing the structural analysis of a beam. Fine. Next step is what? What is the next step? बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आप ही लोग आज बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं. मैं बोलूंगा तो फिर आसान है, आप लोग को समझना पड़ेगा. तो आप लोग बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Sir, preprocessor and element type. Next step is I have to define the element. That means
If you see, this beam is made of some element, and that element is beam to node 188. I have to define this element in ANSYS. Then only that ANSYS will understand that yes, you are solving a beam problem. Yes or no? So in order to define that element, what I will do, I will click on preprocessor, then element type, then उसके बाद क्या करूंगा? Add. I will add elements. So click on add, edit, delete. अब क्या करूंगा? In this element type dialog box, what I will do next? Sir, add. Yes, I have to add. If you see in this screen, no element is defined. So that's why it is written none defined. So you have to add that particular element for which you will be making the beam. So click on add. Again, one library of element type window will open. In this library of element types, that means library, like your college library. In your college library, many books are available, but you want to study which kind of book? You want to study a book of design, you want to study a book on thermal, or you want to study a book of manufacturing. So in this library of element type, which one will I select? Beam. Yes, since we are solving or we are analyzing the beam, so I will click on beam. In the last lecture, if you remember, we were solving or we were analyzing the truss, and truss is made up of link. So I have selected link, but here I will not select link, but I will select beam. So let us select inside the structural mass, select beam. And in this beam, two options are available. One is 2 node 188 element and 3 node 189 element. So according to problem, which element will I choose to make the beam? 2 node 188. 2 node 188 given in the problem. If it is not given, then you can choose anyone. So let us choose 2 node 188 element, and this element will vary. I am having ANSYS 18 version. So in ANSYS 18 version, inside beam only these two combinations are there. 2 node 188 and 3 node 189. If you choose the latest version, that is ANSYS 20 version or ANSYS 19 versions, there may be many more options are available. 2 node 188, 3 node 189, some more 4 to 5 options are available. So that will vary. If सर somebody is 19 में having भी 2 ही ऑप्शन है. दो ऑप्शन है नहीं, नॉर्मली ये वैरी हो सकता है, जरूरी नहीं है. अभी आगे जाके अभी आप लोग अभी आज से 10 साल के बाद जब आप एनसिस यूज करोगे, न्यू वर्जन आएगा, हो सकता है कि उस समय और एलिमेंट डिस्कवर हो गया हो, तो वो हो सकता है. दैट इज नॉट एन इशू. फाइन. So I will click on 2 node 188, then click on OK. Now see, in this element type dialog box, that beam has been defined. That element has been defined. Now you can draw your beam. Is it clear? Yes, sir. So let us close the window. Yes, Close. sir. Fine. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? चलो, मुझे ये बीम बनाना था. कौन सा बीम? हाँ, मुझे ये बीम बनाना है. इस बीम का नाम क्या होगा? वो नाम मैंने इनपुट कर दिया एनसिस में, दैट इज 2 नोड 188. अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप? देखो, क्वेश्चन को देखो और देख के मुझे बोलो अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप. See, in today's class you have to answer, तभी आप सीखोगे. मुझे तो आता है, मैं तो तुरंत बोल दूंगा तो हो जाएगा. अभी आपको सीखना है तो आपको आंसर करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैन यू सी अभी आपने बीम का नाम डिफाइन किया. जैसे कि मेरा नाम शुभांकर, तुम्हारा नाम एक्स, किसी का नाम वाई. अब नेक्स्ट है, अब वो जो वाई है, वाई जो है वो कौन सा कपड़ा पहनता है, उस कपड़ा का मटेरियल क्या है. सिमिलरली आई हैव टू स्पेसिफाई द मटेरियल ऑफ दिस बीम. और मटेरियल स्पेसिफाई करना मींस यू हैव टू स्पेसिफाई द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो वैल्यू ऑफ द बीम. Yes or no? Yes, sir. So I have to input the value of modulus of elasticity and Poisson's ratio. In order to input those values,
what I will do? कहाँ क्लिक करूंगा? Material properties. I will click on inside preprocessor. I will click on material props. Fine. Again inside the material prop, many options are available. Material library. Material library. मेरे हिसाब से गलत है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ, मटेरियल लाइब्रेरी पाथ स्टेटस, इंपोर्ट लाइब्रेरी, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, सेलेक्ट यूनिट्स. कहाँ है कुछ? You will select material model. Now in material model, inside this define material model behavior dialog box, which one you will select? Structural, correct. Inside structural, many options are available. Which one you will select? Linear. Linear, okay, correct. We are solving for, neither we are solving any thermal related problem, nor we are solving any vibration related problem, or else we would have gone for damping. And neither in my given problem friction is present, so I am not choosing this friction coefficient. So let us click on linear. Again in linear, which one I have to select? Elastic. Elastic, select. Again inside elastic, three options are available. Isotropic, Your material can be isotropic, it can be orthotropic, it can be anisotropic. So I am solving for which kind of problem? Isotropic. Isotropic, that means I am assuming that the value of E and mu is same in all the directions. Fine. So click on isotropic. Okay. Now you see one dialog box has opened, which is linear isotropic properties for material number 1. Now in this dialog box, what is this EX and what is this PRXY? EX क्या है और PRXY क्या है? EX is modulus of elasticity and PR is Poisson. Yes, sir. Yes. Poisson ratio. Yes. EX is modulus of elasticity and PRXY is modulus, and is your Poisson's ratio. So can you tell me the value of modulus of elasticity in the from the problem? Value of modulus of elasticity from the problem? So 2 into 10 to the power 5. 2 into 10 to the power 5, but I cannot write 2 into 10 to the power 5. I cannot write 2 into 10 to the power 5 over here. ANSYS will not understand 2 into 10 to the power 5. उसका एक particular एक command होता है लिखने का. वो क्या command होता है? Sir, E करके command है. Yes. 2 E5. E5. E Yes, means 10 to the power. 2 into 10 to the power 5. 2 into that 10 is nothing but E, either small e or capital E, and that 5 represents to the power. Fine. Okay. So I will suggest you, if you don't know, please write it somewhere in your copy, because at last when you have to submit all these reports, fine, with proper algorithm, fine. So you should know these things. So I will write 2 E5 and PRXY is Poisson's ratio. So please tell me the value of Poisson's ratio from the question. 0.3. 0.3. Okay. There is no command for it. Fine. So I will write this as wait 0.3. So let us write it 0.3. Then click on. फिर कहाँ क्लिक करूंगा? सर ऐड करना होगा. ऐड क्यों करूंगा? ऐड यहाँ पे टेम्परेचर बोल रहा है कुछ. सो नेक्स्ट क्या करूंगा? Okay. सर ओके होगा. ओके. क्लोज द डायलॉग बॉक्स. फाइन. नेक्स्ट चलो, आपने पहले तो नाम डिफाइन किया. भाई मेरा नाम एक्स है. उसके बाद वो जो एक्स आदमी है वो कौन सा कपड़ा पहनेगा, उसका क्या मटेरियल होगा, ये डिफाइन किया. अब क्या करूंगा नेक्स्ट? क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के बताओ अब क्या करूंगा नेक्स्ट. ई डिफाइन हो गया, म्यू डिफाइन हो गया. नेक्स्ट
Next, Sir, The depth length and the breadth of करना पड़ेगा. if you if you see the cross section of the beam, बिना क्रॉस सेक्शन इनपुट किए you cannot model the beam. So cross section is what? Rectangular, whose depth is 200 mm. Whose breadth is 200 mm and depth is 300 mm. So I have to input these two values. In ANSYS. So how I will input? बताओ क्या करूंगा उसके लिए? sir section. इसके लिए yes, I will inside preprocessor I will click on sections. Whatever geometry I am making, what is the section of that geometry? So click on sections. Again inside section many things are available. So किस पे click करोगे आप? Beam. Yes, we are solving for beam. We want to make a section for beam. So click on beam. Again inside beam, many options are available. Which option you will select? Common section, custom section, taper section, plot section, NL generalized, composite section. Sir, common section. Yes, normally rectangular section, circular section, all these are common type of sections. If the beam would have made up of taper section, then I would have gone for taper section, fine. And if the beam is made up of composite section, that means that same beam is made up of different types of materials. A half portion of the beam is made up of steel, remaining half portion is made up of aluminium, then I would have gone for composite section. So let us click on common section. Now, if you open this click on common section, this dialog box will open. Beam tool dialog box. Fine. So if you see what is this ID? Here ID is 1. Why? Because see the question. In this question, the cross section of the beam is uniform throughout. For that ID is 1. If it was a composite beam, that means from point A to this point, which point from where this point load is acting till this point, till 2000 meter. If the cross section of the beam is circular, then from this end to this end point B, cross section is rectangular, then this is a case of composite beam. Then in that case, from point A to this 2000 meter, since cross section is circular, so wait. So while selecting, where is that common section? कहाँ चले गया? सर वो स्क्रीन को थोड़ा सा इधर उधर कीजिए तब आएगा, पीछे स्क्रीन के चला जा रहा है वो. और यही तो प्रॉब्लम है, बार बार मतलब हमको उधर जाना, मेरे को समझाने के लिए तुमको तो उधर जाना पड़ रहा है. तो एक काम करो, तुम पहले ना इसको लिख के रखो, तुम लोग ये बना लो ये वाला डायग्राम, तो बार बार मुझे जाना नहीं पड़ेगा ये पीपीटी वाले विंडो में. ये डायग्राम बना के रखो, पहले बार बना लो. आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. Just draw this diagram, draw this modeling of this entire beam model and write down all the important points. लिख लो, तो फिर आप लोग मुझे बोल पाओगे, फिर मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा इस स्क्रीन पे. ठीक है सर. फाइन, जल्दी लिखो और जैसे हो जाएगा तो मुझे बोलना, फिर आई विल मूव फॉरवर्ड. तो क्या है ना, प्रॉब्लम हो रहा है ये. लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था. हो जाएगा तो मुझे बोलना जब पूरा बनाना हो जाएगा. Done? Should I move forward? No sir.
डन सर। Okay, fine. So I will not open this figure again. अब वो कहाँ गया, यही तो प्रॉब्लम है ढूंढना है। तो हैंग तो नहीं हो गया, विंडो कहाँ गया, वही। सर इस स्क्रीन का साइज स्मॉल कीजिए ना, वो पीछे होगा। मेरा भी अभी वही हुआ है। कहाँ फिर से हो, सर, फिर तो से बंद कीजिए हो सर, जाएगा बीम और कॉमन सेक्शन करके, तब आएगा। हैं? क्या बोल रहे हैं? इसमें तो एक तो ये तो अपना कमांड विंडो है एंड दिस इज योर मेन विंडो। हाँ, इस- सर फिर से ओपन कीजिए वो सेक्शन में जाके, बीम फिर कॉमन सेक्शन, तब शायद आ जाए। ओके, प्री प्रोसेसर, देन सेक्शंस, then common section, section, beam, common section, replo, सर एक बार कॉमन सेक्शन में क्लिक कीजिए। नहीं वो है, पता नहीं, लास्ट टाइम जैसे ही हुआ था ट्रस्ट के टाइम यस पे। सर, वो है, बार बार वो हाइड हो जा रहा है। उसके लिए स्क्रीन को इधर उधर करने पे शायद आ जा रहा और है। फिर मुझे फिर बंद करके फिर इस जगह से चालू करना पड़ेगा, शुरू से फिर वो रिपीट करना पड़ेगा उस स्टेप। सर ऊपर वाले स्क्रीन को इधर उधर कर्सर से मूव कीजिए ना, शायद पीछे में होगा तो फिर उसको ला दीजिएगा। नहीं है सर, ओके, देखिए वहाँ पे। हाँ 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 हाँ, सर वो अंडरस्टूड, ठीक पीछे है, ठीक पीछे चला जा है, रहा है। हाँ 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 हाँ, फाइन। सर वो फिर पीछे चला जाएगा। अरे पूरा तेरी, समझ, इस स्क्रीन के साइज को छोटा कीजिए, तब होगा। ऐसे नहीं होगा सर, उसको ओपन कीजिए हाँ, और सर यहाँ पे, हाँ, अच्छा, इस तरह से ओके, इस टैब के साइज को स्मॉल कीजिएगा, तब होगा। मतलब इस हाँ, टैब से, इस टैब के साइज को स्मॉल कीजिएगा, तब होगा। फिर वो पीछे चला जाएगा। ओके, इसको स्मॉल करने बोल सर रहा है, ये अब वाला ड्रैग मेन हाँ स्क्रीन कीजिए को। हाँ सर अब हाँ सर, ड्रैग इसी को कीजिएगा स्मॉल तो हो कीजिए। जाएगा सर। ड्रैग कर लीजिए खाली। मतलब ये ऐसा बोल रहा है, कहाँ हो रहा है टैग? सर इस वाले फाइल को, उसको नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। फिर पीछे हाँ, चला, ये वाले फाइल को, हाँ। अरे पूरा ओपन कर सर दे आप रहे हैं। ड्रैग अरे कीजिएगा ना तो आ जाएगा। सर उसको ड्रैग कर लीजिए एक बार। नहीं हो रहा है, मैं करके देख रहा हूँ। सर इसमें ये राइट मोस्ट कॉर्नर पे, ओके ये ओके, जो चलो राइट, ठीक है, तो अभी पहले फिलहाल मैं ऐसे ही समझाता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, फाइन। सो इफ आई व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, the if the first part of the beam is made of circular cross section and the second half portion of the beam is made up of rectangular cross section, then I have to input this id value two times. Why? Because first half portion of the beam is circle, for that id number 1. Second half portion of the beam is rectangle, for that id number 2. But in this case, since the entire beam is made up of rectangular cross section, so no need to change this id number. Fine. So id number is 1. Name is, say, let us write down rectangular cross section, rectangular, rectangular cross section. Done. Now click on subtype. If you can please mute yourself so that it will be good. Fine. Now please click on subtype. Now if you see in subtype you will be having different possible geometry of the beam. So I need to select which geometry out of these सर subtypes. फर्स्ट फर्स्ट वन। First one, because it is a rectangular geometry which is having some breadth and which is having some depth. So by default already first one is selected. Fine. So this is my breadth B and this is my height H. So can you please tell me in the given question how much is breadth and how much is the height? I am not opening that PPT window again. I think you might have written सर down how 200 much and 300। breadth, which one is 200 and which one is 300? B is सर how much, H is how much? बी सर 300।
and h B is 200 है, breadth is 200 given in the problem, and your depth, that is height h, is 300 mm. ध्यान रखना mm में है. So if I am putting here in mm, if I am putting Sir, everything breadth is here, 200 mm. So breadth breadth is is 200. 200. So breadth is 200 and height is 300. So remember, you are taking the distance in terms of mm. So every time you have to take the distance in terms of mm. Please keep these things in mind. Once this is done, then click on apply. Apply, then click on OK. अरे तो आया ही नहीं स्क्रीन पे, क्या मुश्किल है. मैं बोल रहा था ना, यही प्रॉब्लम है इसमें. I'm doing one thing. I'm doing it from starting. ठीक है, मैं तब तक यहाँ तक पहुंच जाता हूँ स्टार्टिंग से फिर से. हेलो. Yes, ओके sir. सर. ठीक है, नहीं तो क्या है ना, बार बार ऐसे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये होगा नहीं फिर. ओके सर. Okay, yes. 200, 300, then rectangular cross section, fine. Apply, okay. ना नहीं आ रहा है इसमें, नहीं तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाता. ठीक है, मैं इसको फिर से करता हूँ. Quit, okay, fine. Let me present my screen once again. ANSYS 18. So then APDL. This time I will not write the title name and job name, directly I will do it. Fine. Can you see the screen? yes sir. Yes, sir. Okay. So preference, structural, okay. Then preprocessor, element type, add, edit, delete, add, beam, 2 node 188, okay. It has been added, close. Then the next step is insertion of E and mu. For that, add preprocessor, then element type. Oh, already it has been added. So no. Yeah, material model. Then material models, then click on structural, linear, elastic, isotropic. जल्दी से बोलो value of E. 2e5 2E5. 2E5, Priya, 0.3. 0.3. Click on OK, close, minimize this. Minimize, again click on preprocessor, then sections, then beams, then common section. ID is 1 because only one cross section is used. Name, say rectangle cross section, rectangular, let us write rectangular. Then already the subtype rectangle is selected. Offset to centroid. Offset to centroid means then what ANSYS will do is that ANSYS will take the axis from the center. So it is offset to centroid. Tell me the value of B. 200, right? 200 sir. B is 200 Yes, sir. mm. H is 300 mm, and click on apply, then click on OK. Now why? Okay, fine. Again click on common sections. You need to see whether the sections has been created or not. In that, click on preview. If you click on preview, now you see that your beam is made up of rectangular cross section,
and the axis which the ANSYS has taken, that is because you have taken, it is offset to centroid. So this is your axis. From this point, this side x is positive, this side y is positive, this side x negative, this side y negative. So you can see total breadth of the beam is your 200. So this is your 0, 0 to plus 100, 0 to minus 100. Total is 200. Similarly, your depth of the beam is total 300 mm in length. So since this is my axis, so this will be my 0. From 0, this much will be plus 150. From 0, this side will be minus 150. In altogether, it is 300. Is it सर clear? सर एक बार और रिपीट करेंगे सर? कॉमन सेक्शन के बाद क्या किया सर? कॉमन सेक्शंस पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगा, बीम टूल हाँ वाला सर, जो वो हो विंडो गया, है ये ओपन हो वो जाएगा. हो गया. Now हाँ in सर, this उसके बाद beam tool window, if your entire beam is made up of one section, in this question the entire beam is made up of one section, that is rectangle, so ID number is 1. But there can be a case when the beam is made up of composite section. That means if the first part of the beam is made up of circular cross section, second part of the beam is made up of rectangular cross section, then for circular cross section ID number 1 you have to write it as a circular cross section. Your subtype will be circle. You have to enter the radius or the diameter, then that circular cross section of the beam will be created. Second part is rectangular cross section, so your ID number will change. Now it is ID number 2, name is rectangular, subtype is rectangle. You will give the value of b, that is width. You will give the value of height h. Then the second part of the beam will be rectangle, which will be seen in the diagram. But in my question, the entire beam is made up of rectangle cross section. So ID number is 1. I am not changing this ID number. Is it clear? यस सर. ठीक है. So the breadth of the beam is 200 mm, height is 300 mm. I am taking it in mm. Then I will click on apply, then click on OK. It has been stored in the ANSYS. If you want to see the cross section, for that you will click on preview. So now this cross section is visible to you. Since the centroid, since you have did offset to centroid, so this is your 0, 0 origin. From here x is positive, from this side this is y positive, from this end negative side x negative, along downward direction y negative. So that's why this value is 0, this value is 100, and this value is minus 100. In all together this total is 200. Likewise in vertical direction total is 300. So this is 0 plus y direction, this value is 150, minus y direction along, this value is minus 150. In all together this is 300. Is it clear? कोई doubt है? No, sir. Okay. No, sir. Now, if you want to come back to the original window screen, for that, what you will do? You will click on plot, then replot. You come back to the original screen. Clear? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Okay, now we need to model the beam. We need to model the beam. If you see in the diagram, which diagram? This diagram, I can model this beam by key points or by nodes. So say this is node number 1, this is node number 2, this is node number 3, and point B is node number 4. So in order to model this beam, I should know the coordinate points of nodal point 1, 2, 3 and 4, and then I can put those values in ANSYS. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So now you will tell me one by one what are the coordinate points of nodal point 1, nodal point 2, nodal point 3 and nodal point 4. Okay, fine. So for that, what we will do, again we will click on main menu, preprocessor, then कहाँ click करूँगा उसके बाद? Modeling. Yes, click on modeling because we are modeling the beam.
देन मॉडलिंग के बाद create, क्रिएट, देन इनसाइड क्रिएट nodes, की पॉइंट्स में भी जा सकते हैं और नोड्स में भी जा सकते हैं, फाइन. सो लेट अस गो टू की पॉइंट्स. देन इनसाइड की पॉइंट मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल. व्हिच ऑप्शन आई विल सेलेक्ट? Inactive CS. Inactive coordinate system. In the last class I have told you there are three systems: global coordinate systems, local coordinate systems, fine. So I will go to active coordinate system. So one dialog box will open: create key point in active coordinate system dialog box. So key point number is 1. Can you tell me the coordinate points values? 0 0. 0, 0 0 0. So x is 0, y is 0, z is 0. Click on apply or OK. कहाँ क्लिक सर करूंगा? सर अप्लाई होगा 4 अगर to 8 OK करना कर होगा. दोगे तो वो पॉइंट छोड़ देगा, छोड़ना नहीं है मेरे को. उसके बाद 2 3 और 4 पे जाना है. सो क्लिक ऑन अप्लाई. देख पकड़ लिया. देन आई विल चेंज द की पॉइंट एज नंबर 2. कोऑर्डिनेट पॉइंट 2000 0 0. यस, मैं mm में ले रहा हूं तो इट विल बी 2000. दैट मींस 200. बाकी 00 है, नो इश्यूज. अप्लाई. देन थर्ड नोडल पॉइंट 3. बताओ क्या होगा वैल्यू? एक्स वाई जेड में क्या होगा? 3 0 0 0 0. एक्स में होगा 3000. 3000 00. अप्लाई. एंड लास्ट नोडल पॉइंट और की पॉइंट इज 4. क्या होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है तो एक्स में क्या चेंज होगा? 4000. 4000. यस, सो आई विल पुट और आई विल राइट 4000 00. अब क्या करूंगा? अब क्लिक ऑन ओके करते हैं. ओके. देखो 1 2 3 4 4 की पॉइंट्स हैव बीन जनरेटेड. नाउ फ्रॉम दीज 4 की पॉइंट्स योर एंटायर बीम विल पास. ठीक है, हाँ. कोई डाउट? no sir, ठीक है, तो इसका आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. हर एक स्टेप में कलर्ड प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. फाइन, ओके. नेक्स्ट, इफ यू सी द प्रॉब्लम, your cross section is rectangular cross section and your element is line element. That means in order to model my beam I have to join nodal point 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 by a line. Yes or no? Let us join. For that what I will do, can you tell me? For that क्या करूंगा मैं? प्री प्रोसेसर में क्या करूंगा? कहां क्लिक करूंगा प्री प्रोसेसर में? मॉडलिंग. मैं अभी भी मॉडल कर रहा हूं, मॉडलिंग. देन क्रिएट. देन क्रिएट में कहां पे क्लिक करूंगा? elements, मेनी ऑप्शंस आर देयर. डोंट On node या lines. लाइन, Lines, sir. क्योंकि आप जो क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है कि हर नोड के बीच में जो एलिमेंट है वो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है. फाइन, सो बेटर है कि मैं लाइन पे क्लिक करूं, क्योंकि अगर आप एलिमेंट पे क्लिक करोगे बहुत तरीके का एलिमेंट अवेलेबल है. तो अभी एट प्रेजेंट, in order to simplify my calculations, let us assume that all the elements of the beam is nothing but line elements. So let us click on lines. फिर लाइंस के अंदर 4 ऑप्शंस है: लाइन, आर्क, स्प्लाइंस, लाइन फिलेट. इसमें क्लिक करूंगा. lines, I will click on line. Inside line many options are available. Which option will I select? Straight line. Select straight line. Now one dialog box will open: create straight line dialog box. That means here I have to pick, in order to draw that line between the nodes I have to click those particular nodal points. So which nodal point will I click? Firstly 1 and 2, click 1 and 2. उसके बाद अप्लाई करूंगा या ओके करूंगा? apply, कुछ नहीं करूंगा. अगर आप अप्लाई करोगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, क्रिएट स्ट्रेट लाइन डायलॉग बॉक्स, ये हट जाएगा. अगर ये हट जाएगा तो फिर से आपको स्ट्रेट लाइन में क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स लेके आना पड़ेगा. व्हाइल जॉइनिंग
nodal point 2 to nodal point 3, nodal point 3 to nodal point 4. तो आप क्या करोगे? Join nodal point 1, click on 1, click on 2. 1 and 2 is joined, then remove that cursor point. Then again click on 2, click on 3. See, remove from that point 3. Joined, again click on 3 and click on 4. Now click on apply and OK. Now see, your element has complete. ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर यहाँ तक लास्ट सेमेस्टर में भी किए थे सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। देखो, हर एक एलिमेंट अलग अलग कलर से डिनोट हो रहा है। नोड 1 और नोड 2 के बीच में जो एलिमेंट है दैट इज लाइट ब्लू इन कलर, 2 और 3 के बीच में जो एलिमेंट है दैट इज वायलेट इन कलर, एंड 3 और 4 के बीच में जो एलिमेंट है दैट इज रेड इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट I am interested in, since I am interested in doing the finite element analysis of this beam. Finite element analysis means, अब ये जो this is nodal point 1, this is nodal point 2, 1 और 2 के बीच में एक ही एलिमेंट है। अगर मैं इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दूं तो मेरा जो एनालिसिस होगा वो और एक्यूरेट होगा, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो और अच्छा रिजल्ट आएगा। सिमिलरली जो नोडल पॉइंट 2 और जो नोडल पॉइंट 3 है, इन बिटवीन 2 and 3 एलिमेंट 2 is present. If I divide my element 2 again into more number of element, my analysis will be more accurate. Similarly, if I divide element 3 whose nodal point is 3 and 4 into again some finite number of elements, my analysis will be most accurate. Ultimately what I am doing, I am doing the finite element modeling of the entire problem. छोटे पूरे प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। इज इट क्लियर? टू गेट द बेस्ट रिजल्ट और द एक्यूरेट रिजल्ट, ताकि मान लो मैंने बोला दैट आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्ट्रेस कंडीशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उससे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। So by this finite element modeling technique, I can say that yes, at this particular point, deflection is very less, or deflection is moderate, or deflection is high. Clear? कोई doubt? No, sir. So for that, what we will do, we will mesh the entire model. This process in finite element method or analysis or ANSYS is known as meshing. So next process is in main menu, preprocessor, click on mesh. Then in meshing, click on size control. Click on size control. Then since I am manually, I will allocate the mesh. So click on manual size. Fine. In manual size, many options are available. Global, you want to mesh globally. You want to mesh the areas. You want to mesh the lines, you want to mesh the key points, you want to mesh the layers. So what I will do, I will select global meshing. I want to mesh the entire structure, and the entire structure meshing in FE, finite element modeling, or in ANSYS is known as global meshing. ठीक है? Now in this global meshing, again many options are available. So click on size. कितना साइज होगा हर एक एलिमेंट का, वो जो फाइनाइट, जैसे कि एलिमेंट 1 whose nodal point is 1 and nodal point is 2, this element 1 to 2 will be divided into how many sizes, in a number of 10 size, 20 size, 30 size, कितने number of size में divide होगा. So click on size. If you click on this size, this dialog box will open, global element size dialog box. In this you can see this second option, that is number of element division. That means this element number 1 whose nodal point is 1 to 2, how many number of element you want to divide this element number 1. Similarly element number 2 whose nodal point is 2 to 3, how many number of finite element you want to divide this element number 2.
So let us write this number of element division as 30. You can take as many. As more number of element you will take, more accurate will be your answer. More accurate will be your analysis. If I write 30 over here, this means what? Element number 1, whose nodal point is 1 to 2, has been divided into 30 number of finite element. Similarly, element number 2, whose nodal point is 2 and 3, is divided into 30 number of finite element. Similarly, element number 3, whose nodal point is 3 and 4, is being divided into 30 number of finite element. Then click on OK. क्या ये बात समझ में आया? Any doubt? सर वहाँ साइज ऑफ ईच एलिमेंट में 0 क्यों रखे हैं और बाद में नीचे में सब? कौन सा साइज में 0 और वो साइज में गया? हाँ, Yes, ये sir, size. एलिमेंट एज लेंथ, एज लेंथ, मुझे एज लेंथ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो पूरे बीम को, इस बीम में एट प्रेजेंट 3 एलिमेंट प्रेजेंट थे, उससे मैंने बीम को मॉडल किया। मॉडल करने के बाद हर एक एलिमेंट को व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 30 small finite element. I am not interested in size. Size तो ऑलरेडी आप दे चुके हो, वो जो क्रॉस सेक्शन जो आप दिए हो वही तो उसका साइज Yes, है। sir. तो मुझे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, so that why I will keep it. Fine. So the total element division is 30. Then click on OK. Fine. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ मेशिंग वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में? सर हर एक पार्ट में 30 डिवीजन हुआ है। Yes. Element number 1 is divided into 30 small elements. Element number 2 is divided into 30 small elements. Element number 3 is divided into 30 small elements. In all together, there are how many elements? 90 plus 30 60 plus 30 90. तो अगर टोटल 90 एलिमेंट है इस पर्टिकुलर बीम में, कितना नोड हुआ टोटल? टोटल नोड कितना हुआ? अगर 90 एलिमेंट है पूरे बीम का, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नोड? कितना नोड हुआ मैक्सिमम? कितना नोड हुआ? सर जितना एलिमेंट है उतना ही होगा ना। कैसे? इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल देखो, अभी तो टोटल 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट का नोडल पॉइंट 1 एंड 2, दूसरा एलिमेंट का नोडल पॉइंट 2 एंड 3, थर्ड एलिमेंट का नोडल पॉइंट 3 एंड 4। तो एलिमेंट 3 है, नोड 4 होगा। तो अगर एलिमेंट 90 है पूरे प्रॉब्लम का, नोड कितना हुआ? 91 होगा सर। 91 नोड। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई देगा। आया सर समझ अगर में? 2 से 3 के बीच में अगर हम लोग को यूवीएल लगाना हो तो क्या करेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, हम वो लगा सकते हैं, उसका फिर अलग ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन अलग आएगा। वो जब मैं कराऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो हम लोग यूडीएल का बात कर रहे हैं, उसका ऑप्शन है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, बहुत कुछ। इसी बीम को तुम इसका 10 15 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो चेंज करके लोडिंग पैटर्न। क्या ये समझ में आ गया? दैट इन दिस पर्टिकुलर एंटायर बीम मॉडल देयर विल बी टोटल 90 एलिमेंट्स एंड टोटल 91 नोड नंबर्स। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ओके फाइन, तो सबको मिनिमाइज कर देते हैं अभी। नेक्स्ट अभी मेरे को देखना है कि डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है 90 एलिमेंट्स में। फॉर दैट व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल क्लिक गो टू मेन मेन्यू, प्री प्रोसेसर, मेशिंग, इनसाइड मेशिंग, नाउ क्लिक ऑन मेश। You are meshing it. Click on mesh. Which one you are meshing? You are meshing the lines 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So click on lines. Fine. Now see, one dialog box is opened, that is mesh line dialog box. Now you want to mesh the entire structure. So you will click on box. When you click on box, you can select the entire structure. Fine. So please select. Now you can select the entire structure. I am selecting the entire structure. Done. Then click on OK. OK. हो गया mesh. अभी दिख नहीं रहा है बट दिखेगा।
Now this entire blue line represents that meshing has been done. Now it is not visible, but it will be visible to you in couple of time. Is it clear? कोई doubt? No, sir. Any doubt? Yes, sir. Clear, sir. No, sir. Okay. आगे बढ़े? Fine. Next. Now you want to see whether meshing has been done or not. For that, what you will do? You will click on plot, then click on lines. अब दिख रहा है? Is it visible to you? Yes, sir. ठीक है. अभी Yes, इसको जब sir. आप मैक्सिमाइज करोगे तब आप काउंट करोगे तो इट विल बी टोटल 90 स्मॉल लाइन एलिमेंट्स. अभी मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहा हूं, इसलिए अभी गिनना मुश्किल है. इफ यू मैक्सिमाइज इट विल बी टोटल 90 स्मॉल लाइन एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड मेशिंग इन ANSYS. ठीक है, चलो मेश कर दिया मैंने. नेक्स्ट, I have to apply boundary conditions in the problem. Boundary condition means if you see the problem, end A and end B are fixed. That boundary condition I have to apply. As well as if you see the problem, UDL is also acting. That UDL is also one boundary condition. That also I need to apply. And the third boundary condition is one point load is also acting in the problem. That also I need to apply. All these things are nothing but applying the boundary conditions of the problem. So likewise what we have did in truss. So for that what we will do, first let minimize everything. ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा? I will go to preprocessor, then preprocessor के बाद कहां पे जाऊंगा? Where I will go? कांस्टेंट होगा. No. Real constant तो दूसरा चीज है. area of the object, area of the body वो है. Then you will go to loads. Click on loads. फिर loads में जाके 3 ऑप्शन है. Which option I will choose? Which option will I choose? So Sir, define load. Define load. Define loads. Click on define loads. Again in define loads 4 options are there. Which option will I choose? Apply. Apply. Click on apply. Again in apply many options are there. Which option you will choose? Structural. Structural. Click on structural. In structural many options are there. You want to apply the displacement, force, pressure, temperature or inertia. Now what you will select? Sir, force by moment. That we will go later on. First, if you The see the displacement. problem in the problem, if you see the problem in the problem, the beam is rested on this knife edge at point A and a knife edge at point B. That means displacement is restricted, because if you apply the load, then the beam will bend like this, but deflection will be 0 at A and B. That deflection I have to give in ANSYS. I have to input that value in ANSYS. Fine. For that, what I will do, let us click on displacement. Again, in displacement, many options are there. So which option I will select? Which option will I select? On lines. Why you will select on lines? If you see the diagram, Sir, on node. आपका बीम क्या लाइन पे रेस्ट कर रहा है कि नोड पे रेस्ट कर रहा है? ये Nodes पे. नोड पे रेस्ट कर रहा है. पॉइंट बी जो नाइफ है, it is resting at one node. So you will select on nodes or on key points, because we have modeled this problem by the help of key points. So I will select key points. If I have modeled this point initially while putting those coordinate values, if you have modeled it by the help of nodes, then you have clicked on nodes. So let us click on key points. Fine. Again, this dialog box will open. Now you have to pick which nodal point you will pick. You will pick the first nodal point and you will pick the last nodal point. Let us pick the first nodal point.
and the last nodal point. Then click on apply. After clicking, this dialog box will open. Now in this dialog box you have to apply. Now if you see the diagram, in that diagram, since the knife edge is placed at both the two extreme point, with that what will happen? This UI is what? UX means displacement along x-axis. UI, displacement along y-axis. ROTX means rotation along x-axis. Fine. So by looking at the diagram, I can say that displacement, I don't need any displacement along x-axis. Neither I need displacement along y-axis, neither I need displacement along x-axis, only at point A and B, because that is fixed. Fine. Similarly, I don't need rotation also. I don't want that my beam should rotate at point A and B, or else the beam will get failed. So I don't need rotation along x-axis. I don't need rotation along y-axis. Since I am not talking about z-axis, no need to go for z-axis. So you will select UX, UI, UZ, rotation X, rotation Y, and then click on OK. See, it is fixed. End A is fixed and end B is fixed. क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर. बाकी लोग को कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. ओके. नेक्स्ट, ये हमारा काम हो गया, डिस्प्लेसमेंट का काम हो गया. नेक्स्ट we have to apply load to the problem. So load apply करने के लिए again in structural, अब कौन सा, किस पे क्लिक करूंगा मैं? अब किस पे क्लिक करूंगा? लोड अप्लाई करना है तो किस पे क्लिक करूंगा? सर फोर्स बाय मोमेंट. Yes, click on force oblique moment. There is no moment in my question, so I will ignore moment. I will take the force. Then अब force oblique moment, force कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो? Whether you are applying it on key points or you are applying it on nodes or what? तो कौन सा ऑप्शन I will select? सर की पॉइंट में. Key point. Since I have made this problem by the help of key points, so I will select key point. अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम देख के बताओ कहाँ पे कौन कौन सा लोड आएगा. That means from point A, if this is nodal point 1, nodal point 2, nodal point 3, 1 2 3 एक UDL आएगा प्लस nodal point 2 और key point 2 पे एक Fy load act करेगा in the negative y direction whose magnitude will be -500. Is it clear? क्या कोई डाउट है? दो टाइप का लोड एक्ट होगा. हेलो. यस सर. Fine. So first of all, let us apply that point load which is acting at this key point number 2. Let us apply. So on key points, again now I will select this second point. Second point means intersection of this blue line and this violet color line. That will be my second point. First point, second point, third point, fourth point. Let us select. I have selected. Then click on apply. Again this dialog box will open. In this dialog box, on this direction of force oblique moment, I have to apply force in y direction. So click on Fy, and the value of the force is negative because it is acting in negative y direction. So I will write minus how much? Minus कितना? Hello. सर -500. -500 न्यूटन. 500 हो गया. Then click on OK. See, लग गया लोड एक. ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में. यस सर. लोड लग गया है. फाइन. ओके. इसका फिर से आपको एक लेना पड़ेगा कलर प्रिंट आउट. देखो एनसीएस में खर्चा बहुत होगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ. हर एक लैब असाइनमेंट में तकरीबन 100 से 150 रुपए खर्चा होगा. सर जो स्टेप कर रहे हैं मतलब हर जगह, तो हर स्टेप को मतलब एक बार मतलब
पूरा स्क्रीन कैप्चर करके शो करना होगा सर। एकदम एकदम आप स्क्रीन कैप्चर करके पूरा शो करना पड़ेगा, इसको पूरा लगाना पड़ेगा फाइल में जब आप जमा करोगे फाइल। सर एल्गोरिदम भी रहेगा? एल्गोरिदम भी रहेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन द लास्ट टाइम योर सीनियर बैच व्हाट दे हैव डिड इज दैट दे हैव रिटन द एल्गोरिदम इन प्लेन A4 शीट, उसके बाद उन्होंने खाली ये पेजेस लगाए थे। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट एल्गोरिदम के बाद क्या चेंज हो रहा है स्क्रीन में, उसका एक कलर प्रिंट आउट, सेकंड एल्गोरिदम के बाद क्या चेंज हो रहा है उसका एक कलर प्रिंट आउट, ऐसा करके। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप लिख के करोगे और जमा करोगे तो ऐसा, या फिर अगर आप डायरेक्टली इसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट लेके दोगे, वो आपके ऊपर है। सर अभी के लिए तो पीडीएफ में ही कंपाइल करना होगा सबको सर। वो आप देख लो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो सबका अपना अपना है, वो आप देख लो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ू? Yes, sir. Now I have to apply what? I need to apply UDL in the problem. So UDL apply करने के लिए again I will click on force oblique moment. So again what I will do, I will click on loads, then define loads, then structural. अब structural में normally UDL in ANSYS is represented by pressure. Remember one thing, if you don't know please write it down somewhere. अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में यूडीएल अप्लाई करना हो एंथसिस में, you have to click on pressure. So please click on pressure. Now once you click on pressure, अब इसमें आप किस पे क्लिक करोगे? On lines, on areas, on nodes, बहुत ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। I will click it on beams because I am applying UDL on beams. Let us click it on beams. Once you click it on beams, now again you have to select. तो क्या मुझे कोई बता सकता है डायग्राम देख के मैं कौन से नोडल पॉइंट से कौन से नोडल पॉइंट तक सेलेक्ट करूंगा? I will select from 1 से 3। starting nodal point is which and ending nodal point is which. Starting nodal point is 1 and ending nodal point is 3. Okay, good. So let us select. So what I will do, again I will click on box. Click on box because you have to select from 1 to 3 completely. So you cannot click, so you have to select on box. Now select from 1 to 3. 3 means where this violet line is ending. That means till this point. लग गया यूडीएल? देखो यस सर। लग गया ना, ये जो दिख रहा है ना बॉक्स 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 सिंबल, दैट इज नथिंग बट यूडीएल। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन अप्लाई. And when you click on apply, one dialog box will open. Apply pressure on beams dialog box. इसमें आप देखो load key is, you have to change the load key. Load key यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 2. Why 2? Because your load key 1 is the point load which you have already applied in node number 2. This is the second type of load which is acting on the beam. First type of load was the point load. Second type of load is UDL. So you have to change the load key. Load key will be 2 and this load key is valid from node I to node J. Node I is nothing but nodal point 1. Node J is nothing but nodal point 3. So in the question it has been given to you the value of this UDL. That is how much? 400 Newton per meter. But I have to convert it in mm. So please convert and tell me that value. How much is that UDL value after converting it into mm? 400 Newton by meter. उस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा? सर 400 इंटू 10⁻³ मतलब वो पॉइंट कितना, पॉइंट सर पॉइंट 0.4. यस सर। Yes, sir. 0.4. 0.4. Fine. Apply. This will be 2.
And so see here is written pressure value at node I. Node I is nothing but 1. So I will write 0.4. कहां से कहां तक vary हो रहा है? Till nodal point J. Nodal point J is nodal point 3. 0.4. 1 from nodal point 1 to nodal point 3. That UDL value is 0.4 Newton per meter. So I पे 0.4, J पे 0.4. Clear? कोई डाउट? सर वैल्यू आई जे समझ में आ गया, लेकिन सर लोड की टू ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। लोड की टू मतलब पूरे प्रॉब्लम में कितना टाइप का लोड लग रहा है? टोटल 2 टाइप का लोड लग रहा है. द फर्स्ट लोड इज द पॉइंट लोड which is 500 Newton. For that load key is 1. Second type of load is UDL acting in the problem. So I have to change the load key, that is load 2. यस सर, यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है. छोटा भाई का लोड अलग है, बड़ा भाई का कुछ वेट अलग है. तो दोनों का आप थोड़ा ना एक नाम दोगे, दोनों को तो 2 अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना. सर ऑलरेडी एक पॉइंट लोड ले चुके हैं हम लोग, इसलिए यूडीएल के लिए यहाँ पे 1 मैं नहीं लिख सकता, वो 1 ऑलरेडी स्टोर्ड है 0.500 न्यूटन के लिए. फाइन, देन क्लिक ऑन ओके. देखो लग गया यूडीएल. दिस रेड कलर सिंबल रिप्रेजेंट्स यूडीएल. दिख रहा है? यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके फाइन. नेक्स्ट, आई हैव मॉडल्ड द एंटायर प्रॉब्लम. मैंने फिक्स कर दिया बाउंड्री कंडीशन. आई हैव अप्लाइड द यूडीएल. आई हैव अप्लाइड द point load. I have done everything. Now I have to solve this problem. So for that what I will do is first minimize everything or else मुश्किल हो जाएगा. Just minimize everything. Minus, minus and minus. So in order to solve, what you will do, you will click on solution, then click on solve, then click on current local solution. This dialog box will open. Click on OK. If you click on OK, you will get one note called solution is done. If you are not getting this note, then that means there is some error. It will tell you that some error is there in your problem. Again you have to modify that error, that at which point or at which step what mistake you have did. अगर ये नहीं दिखाता है कि सॉल्यूशन इज डन, दैट मींस एरर है आपके प्रॉब्लम में, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है? सो क्लोज इट, क्लोज इट. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके फाइन. नेक्स्ट, नेक्स्ट दिखाए ना. क्या क्या दिखाना है? हेलो सर ये सॉल्व. हाँ, तो सॉल्यूशन पे क्लिक करो. देन सॉल्यूशन में बहुत ऑप्शंस आएगा. क्लिक ऑन सॉल्व, click on current local solution. 2 dialog box will open. Just click on OK. If you click it, there will be one note called solution is done. That means your problem is correct. You have correctly modeled the problem. If you are not getting this message called solution is done, that means some error is there in your modeling part or in your boundary condition part. You have to resolve that error. ठीक है? हाँ सर. Okay. Now let us solve whatever has been asked in the problem. In the problem, it has been asked to show the shear force and bending moment diagram. So for that, what we will do is that in order to see each and every result in ANSYS, you need to click in General Post Processing. So click on General Post Processing. Now, since you need to get SFD and BMD, for that you have to create element table, because creation of element table means you are
solving or you are showing the SFD and BMD of the problem. So click on element table. Then in element table, click on define table. See, nothing has been defined. I have to define it. For that, click on add. After clicking on add, this dialog box will open called define additional element table items. In this, the first, second, third, fourth one, if you see item, comma, com component result data item. In this, many options are there, but you have to select the last option, that is by sequence number. If you select by sequence number, then your ANSYS will understand that yes, this is a command for drawing SFD and BMD. Then again in by sequence number, if you see right hand side, many options are available. SMISC, NMISC, LS, LEPEL, LEPTH. Many options are there. These are different levels which you need to select in order to draw your SFD and BMD. So for drawing SMD and BMD, I will select only SMISC level. So click on this SMISC. And in this portion, if you see SMISC comma, you have to give some number. So in ANSYS, you have to give numbers 3, 6, 16 and 19. Because combination of 3 and 16 will give you BMD of any problem, and combination of 6 and 19 will give you SFD in for beam in any problem. I am not telling this. This is the ANSYS manual is telling. When you download this software, there is one manual. If you see in that manual, it is written that if you choose combination of SMISC 3 and 16, you will get the BMD, and if you choose the combination of SMISC 6 and 19, you will get the SFD of the problem. So for that, I have to input 3, 6, 16 and 19 one by one at a time. So first, let us input SMISC, comma 3. Then click on apply. Again, select by sequence number SMISC, comma 6. Apply. See, 3 is stored in the data, 6 is stored in the data. Next. Again, by sequence number SMISC, comma 16. Apply. See, 16 is also generated. Then last is by sequence number SMISC, comma 19. 19. Then apply. Okay. Fine. All the 4 levels have been created in order to get the SFD and BMD value. क्या यहाँ तक कोई doubt है? Then close this figure dialog box. कोई doubt? Hello. No, sir. Okay. Now your SFD and BMD is ready. You need to see how your SFD and BMD of this problem will look alike. So for that, what we will do, in this general post processing, we will click on plot results in order to see. Inside plot results, click on contour plot. Then inside the contour plot, we will click on line element results. Click on line element results. Then you see again one dialog box will open, that is plot line element results. Fine. I have told you that if you combine SMISC 3 and 16, it will give you BMD. And if you combine SMISC 6 and 19, it will give you SFD. So let us combine SMISC 3 and 16. So label element table item at node I is SMISC 3. At node J is SMISC 16. Fine. Click on OK. If you click, 3 and 16 will give you BMD.
So click, and here see items to be plotted: undeformed shape, deformed shape. That means if the beam is not deformed, then how the BMD is looking. If the beam is deformed, how the BMD is looking. So let us check during the undeformed stage how the BMD is looking. So click on OK. This is your bending moment diagram. एलिमेंट बाय एलिमेंट, दैट मींस यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा रहा है ये पूरा 90 एलिमेंट का दिखा रहा है, हर एक एलिमेंट का क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. एंड दीज कलर्स आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट ब्लू मींस सेफेस्ट जोन, रेड मींस वीकेस्ट जोन. तो अगर आप देखो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे वीक पोर्शन कौन सा है, ये जो रेड कलर में जो शो किया गया है, मतलब यहां से फेल हो सकता है आपका बीम if you consider the BMD part. And all these are values. That means this blue color region will start from 11666.7 and will end at 143136. Light blue color region will start from 143136 to 274605. And since you have taken bending moment, you have so its unit will be Newton millimeter. This value is 11666.7 Newton millimeter because you have taken your displacement in millimeter. Now, if you want to check the BMD of deformed shape, for that again line element table SMISC 316, just click on deformed shape. That means when the beam is deformed, then how your BMD is looking. Click on OK. See, this is the deformed bending moment diagram of the beam. क्या डाउट है किसी को? Hello, any doubt? No, sir. Fine. You have to validate it with the manual calculation. Manually आप इसको solve करोगे, solve करके then validate करोगे. Obviously बात है, manually तो आप 90 elements का solve नहीं कर पाओगे, तो you divide the entire problem into 3 elements. वो जो 3 जितना हमने नोट बनाया है उतना ही एलिमेंट में डिवाइड करके आप BMD बना के दिखा सकते हो. फाइन, ओके. नेक्स्ट आई एम इंटरेस्टेड, इसका भी फिर से आपको एक कलर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट आई एम इंटरेस्टेड इन SFD. For SFD what I will do, again I will click on list line element results. Now combination of 6 and 19 will give you SFD. So for node I it will be SMISC 6. For node J it will be SMISC 19. Let us see the undeformed shape shear force diagram. Click on OK. This is the undeformed shape shear force diagram of your given beam. When the beam is not deformed, this is the shear force diagram. This particular point from where the shear force diagram is changing its sign, this is called the point of contraflexure point, which you have studied in strength of material. If you want to see the deformed shear force diagram for this beam problem, what we will do, again line element result, just click on deformed shape, click on apply or OK. This is the deformed shear force diagram when the beam is deformed due to application of load. तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा रीजन है बीम का जो जल्दी फेल करेगा, कौन सा ऐसा रीजन है बीम का जो लेट में फेल करेगा. डाउट है किसी को? एनी कोई प्रॉब्लम? हेलो? No, sir. No, sir. ओके ओके फाइन. यस ओके. देख रहे हो इतना छोटा सा चीज करने के लिए कितना प्रोसेस है, कितना एल्गोरिदम है, और इसको आप याद नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी हो जाएगा एल्गोरिदम. यही है कि प्रैक्टिस करते 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 देन यू विल बी यूज्ड टू. ओके,
So SFD, BMD we have seen. Next is, let us see the deformed shape of the entire beam. For that, what we will do? Deform पहले तो सब minimize करते हैं. Let us minimize everything. Now for that, again general post processing. Click on plot results. Then click on deformed shape. Fine. Now let us. We can see anything. You can see the deformed shape only. You can see the deformed and the undeformed shape only. So let us look at the deformed shape only. Click on apply or OK. OK. See, this is the deformed shape of the beam. Can you see? Yes, sir. Due to the application of UDL as well as the point load, the beam will bend like this. Now, say we are interested in looking the deformed as well as the undeformed shape. Click on this. Okay. See, this white line represents the original position of the beam before the application of load. Blue color line represents after application of the load, how the deflection is happening. कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? हेलो. नो सर. फाइन. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. इफ यू सी द राइट हैंड साइड, सी you can see the isometric view also. You can get the oblique view. You can see the oblique view of this, say isometric view. This is the isometric view of the deformed shape. This is the oblique view of the deformed shape. This is the front view of the deformed shape. This is the right view of the deformed shape. Top view of the deformed shape. Back view of the deformed shape. Left view of the deformed shape. सर ये कहाँ से कर रहे हैं? ये है ना राइट हैंड साइड में, देखो ये जो ऑप्शन है, ये दिख रहा है, ये क्यूब राइट हैंड साइड, मेरा कर्सर दिख रहा है. अच्छा सर, ठीक है. ये वाला देखिए यहाँ, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू. सेकेंड वन ऑब्लिक व्यू. थर्ड वन फ्रंट व्यू. अब आपको आपके मान लो आप इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आपको मान लो फ्रंट व्यू के ऊपर आपको देखना है क्या हो रहा है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो जिसपे आपको आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए. ठीक है? Any doubt? Fine. So सर आज के लिए इतना रहने दें. नहीं खत्म कर लेते यार. नहीं तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर मेरे को ये इतना पूरा करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए. खत्म कर देते हैं इसको. रुक जा. Now next is, देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वो देख नहीं पा रहे हो कि जो 90 एलिमेंट में मैंने डिवाइड किया था वो उसको आप देख नहीं पा रहे हो. ठीक है, उसको देखने के लिए एक तरीका है, एंड दैट तरीका इज व्हाट? Click on plot controls, then click on style, then click on size and shape. ठीक है. अब इसमें देखो वन ऑप्शन इज देयर, सेकेंड ऑप्शन कॉल्ड डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट. यहाँ पे ऑफ है. जस्ट स्विच ऑन दिस डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट एंड देन क्लिक ओके. अब देखो, अब आपको दिख रहा है एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे आपका बीम डिफॉर्म हुआ. व्हाइट कलर इज योर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बीम. दिस ब्लू कलर इज योर फाइनल डिफॉर्म्ड version of the beam, element by element, after dividing it into 90 small elements. This is front view. This is your isometric view. पता चल रहा है डिफरेंस? हेलो. Yes, sir. यस सर. ठीक है. दिस इज योर ऑब्लिक व्यू. अगर आप इसको जूम करोगे और काउंट करोगे, ये जो हर एक डब्बा, टोटल आपको 90 डब्बा मिलेगा. टोटल 90 डब्बा मिलेगा मींस 90 एलिमेंट्स होगा और 91 नोड होगा. अगर आप इसको मतलब जूम करके करके एकदम प्रिसाइजली काउंट करोगे तो. कोई डाउट यहां तक? No, sir. ओके, चलो फिर
आगे बढ़ते हैं. Now what we want to see the animated view of this deformed shape. That means मान लो टाइम की एक मिनट में अगर आप धीरे धीरे लोड अप्लाई कर रहे हो on this beam, how this deformation is happening by an animated view. For that, what we will do? For that, front view, fine. Let us click on plot controls again. Then click on animate. Click on animate. Then click on deformed shape. One dialog box will open. इसमें देखो दो ऑप्शंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेम्स टू क्रिएट एंड टाइम डिले इन सेकेंड्स. जितना आप नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाओगे उतना एनिमेशन धीरे 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 होगा. जितना आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम रखोगे जल्दी एनिमेशन होगा. तो मैं इसको कर देता हूं 20, नंबर ऑफ फ्रेम्स 20. तो हर 0.5 सेकेंड्स के बाद आपको दिखाएगा एनिमेट करके कि कैसे कैसे आपका लोड वेरी हो रहा है. सो आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ डिफॉर्म्ड एज वेल एज अनडिफॉर्म्ड शेप. लेट अस क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ओके. सर उसमें थर्ड ऑप्शन क्या था, डिफॉर्म्ड प्लस? दिख रहा है एनिमेशन, दिख रहा है, दिख रहा है हाँ एनिमेशन. सर दिख रहा है सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितना फ्रेम लेगा, जितना फ्रेम बढ़ाओगे तो आप धीरे धीरे एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना बेंड हुआ. जितना कम कर दोगे आपको तुरंत दिखा देगा एनिमेट करके 2 सेकंड के अंदर. आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से डिफॉर्म कर रहा है. जो तीसरा वाला जो था वो एज था, एज कैसे एनिमेट कर होगा, एज कैसे डिफॉर्म होगा, वो है तीसरा पार्ट. तीसरा वाला तुम जो पूछ रहे थे. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर, नो. तो इसका हम देखते हैं. ओके चलो फिर नेक्स्ट क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज नोडल डिस्प्लेसमेंट्स. कितना डिस्प्लेस किया हर एक नोड. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, on this general post processing click on contour plot. कहीं पे दिख रहा है contour plot? nodal प्लॉट रिजल्ट में, प्लॉट रिजल्ट में. sorry, plot results, then contour plot, then nodal solution. We are interested in nodes. Click on degree of freedom solution and then you can let me click on displacement. Displacement means it will give you the x component displacement, y component displacement, z component displacement, as well as the vector under root of x square plus y square plus z square. So let us click on this displacement vector sum. और आपको किसका देखना है? So let us click on deformed shape with undeformed model. तीनों का ही देखना है. Click on this and then okay. ओ एक सेकेंड, इसको बंद करना पड़ेगा पहले. क्लोज. ओके वेट, प्लॉट कंट्रोल एनिमेट. को पहले करो 0.5. ओके इसको बंद होने दो. नीचे में क्लोज है, क्लोज कर दीजिए, हो जाएगा वहां से. एक सेकेंड. ये हो गया क्लोज. स्टॉप, देन क्लोज, देन नोडल सॉल्यूशन. ओके हाँ ये देखो ठीक है. वो एनिमेशन को you need to stop that animation. You need to stop that animation, then you have to close that animation. This is your displacement. ठीक है.
This is the isometric view, I think. Oblique. This is oblique view. This is your isometric view, and this is the front view. तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा नोड पॉइंट क्रिटिकल है. दैट मीन्स दिस रेड कलर रीजन, जितना भी रेड कलर रीजन है, ये सब पॉइंट क्रिटिकल है. ये सब एलिमेंट पहले फेल होगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स. सो आपको डिजाइन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि बीम जो है वो यहाँ पे तो स्ट्रांग होना ही चाहिए इस रेड पर्टिकुलर रीजन पे. और देखो ये जो एंड पॉइंट है, this end region is this one and another end region is this one. This is safe. Why safe? Because यहाँ पे तो सपोर्ट है, नाइफ एज का सपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो फेल नहीं होगा बीम. क्लियर है? यस Yes, सर. sir. Okay. Next is we need to see the von Mises stress. That is, see, von Mises stress. For that, what we will do is again click on nodal solution. सर हाँ सर बोलो. इसमें व्हाइट लाइन क्या शो कर रहा है? एक सेकेंड रुक, जिसको बंद करने दे. कौन सा व्हाइट लाइन? यस सर, इसी में जो व्हाइट है. ये जो व्हाइट जो है ये पार्टीशन है, हर एलिमेंट का पार्टीशन. जैसे मोबाइल को आप 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बाउंड्री होगा ना हर एलिमेंट का. ओके सर. बाउंड्री है, एलिमेंट का बाउंड्री है. So next is nodal solution, and I am interested in stress. In stress, I am interested in von Mises stress, and I am interested in deformed shape with undeformed model. You can click on anything. Depend करेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए. अगर कस्टमर को चाहिए डिफॉर्म्ड शेप विद अनडिफॉर्म्ड एज, तो आपको इस पे क्लिक करके इसका एनालिसिस दिखाना पड़ेगा. ठीक है. So I am interested in watching deformed shape with undeformed model. Click on OK. ये है. This is the von Mises stress variation inside the element. Inside that 90 elements. कहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, कहाँ पे स्ट्रेस मिनिमम है, ये डायग्राम बता रहा है आपको. तो ये है इसका आई थिंक आइसोमेट्रिक व्यू. दिस इज ऑब्लिक व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू. ये जो इनिशियल व्हाइट लाइन है, दिस इज योर ओरिजिनल बीम बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड. आप इसको हटा भी सकते हो. हटाने के लिए क्या करोगे? जस्ट क्लिक इट ओनली डिफॉर्म्ड शेप. ओके, देखो खाली डिफॉर्म्ड शेप का दिखाएगा, ओनली डिफॉर्म्ड शेप का दिखा रहा है. ठीक है. एनी डाउट? हेलो, कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. फाइन. नेक्स्ट इज, और क्या बच गया? सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस. दिस वी नीड टू फाइंड आउट. फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज click on list results. That is, इसको बंद करो. Yes, list results. Then reaction solution. कहाँ है? This is reaction solution. Then click on all structural force. जितना भी all structural force मतलब हर एक नोडल पॉइंट पे कितना फोर्स है या कितना डिस्प्लेसमेंट है, सब बता देगा अगर आप इसको क्लिक करोगे तो. ऑल स्ट्रक्चरल फोर्स F. देन क्लिक ऑन ओके. देखो यहाँ पे दिखा दिया. Fx is 0, Fy for node number 1 is 1000 Newton, and for this particular node is 700 Newton. 62, yes, is 700 Newton. फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप टैली कर सकते हो. किससे टैली करोगे? आप जब RA/RB निकालोगे मैनुअली, उससे टैली करोगे कि रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैच नहीं कर रहा है तो कितना एरर है, मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, नॉट एन इश्यू. So this was the reaction force. If you want to see the displacement
of all the 91 nodes. For that, what you will do? Click on okay. Close. Click on nodal solution. एक second. General post processing. Then list results. Nodal solution. Then degree of freedom solution. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम तीनों का रिजल्टेंट दे देगा एज वेल एज एक्स वाई और जेड का डिस्प्लेसमेंट भी देगा हर एक नोड का. क्लिक ऑन इट. ओके देखो नोड 1 ux means displacement in x direction is how much, uy is displacement in y direction is how much, uz is displacement in z direction in how much. ये देखो दिखा रहा है हर एक नोड का डिस्प्लेसमेंट. माइनस क्यों है? बिकॉज बीम इज बेंडिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. अगर आप बीम को ही एक्सिस मान लोगे, उसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो इसीलिए ऑल द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर नेगेटिव. देखो दिया हुआ है हर एक नोडल पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट है along x, along y, along z, as well as the displacement vector sum, that is under root of x square plus y square plus z square. देखो टोटल 91 नोड. अब इसमें से कौन से नोड पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है एज वेल एज कौन से नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये भी बता दिया यहाँ पे, ये लास्ट वैल्यू. तो इसको भी आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा. क्लियर है? कोई डाउट? फाइन. ओके. One last part is to see the vector plot of the problem. That means ये जो displacement है हर एक एलिमेंट पे कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कितना ज्यादा है कितना कम है, वो शो करेगा बाय वेक्टर प्लॉट. फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज अगेन वी विल क्लिक ऑन लिस्ट रिजल्ट्स वेक्टर प्लॉट. एक सेकेंड. जनरल सॉल्यूशन ढूंढो कहां पे वेक्टर प्लॉट है. Plot results, yes, in plot results click on vector plots, then click on predefined, then no need to do over, nothing you need to do over here, just click on OK. ये देखो इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूरे बीम पे. कहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है, कहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, कितना कम है, शो कर रहा है. और जो रेड सिंबल से शो कर रहा है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट है वो सब. दिस इज योर आइसोमेट्रिक व्यू. क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर. Fine. With this we have completed this analysis part, analysis of simply supported beam subjected to uniformly distributed load. What I will do is that by day end I will post this lecture in your Google Classroom, not in that theory class but in the lab class Google Classroom. You can check it, and if you are having this software you can practice it. If you are not having, then I cannot help right now at present, but try to find it out. If you are getting online the pirated version of this software, if you are getting, well and good, just download it and practice these things. ठीक है? So with this I end my lecture over here. If anyone is still left to give his or her attendance, you can give your attendance and you can leave the meeting. Thank you. बोलो. So do we have to again give them attendance? नहीं, अगर आपने दे दिया है तो वेल एंड गुड. अगर जिसने नहीं दिया है उसके लिए Okay, बोलो. okay. सर वीडियो YouTube में दे देना. तुम लोग दे तो तुम लोग लाइक नहीं करते हो उसको, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को. सर कर दिया. सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा? एक रुक जाओ एक सेकेंड. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन आई विल टेल यू क्या होगा. रुको, नहीं तो सबको पता चल